Okay, we'll start with some questions on complex numbers. Okay, question 1. If z square plus twice of 1 plus 2i z minus 11 plus 2i is equal to 0, find z. We have to find z. So basically what we do is we consider this thing as a quadratic. It's a quadratic in z. So in order to find z, we apply Shridharacharya. So it will be minus twice of 1 plus 2i plus minus root over of b square, which would be 4 into 1 plus 2i whole square minus 4 times of 11 plus 2i whole divided by 2a. So which is minus of twice of 1 plus 2i. अब इसका डिस्क्रिमिनेंट सिंप्लीफाई करना होगा. So plus minus root over of this would be 4 into 1 minus 4 plus 4i minus 4 times 11 plus 2i by 2, which is minus twice of 1 plus 2i plus minus रूट के अंदर आ जाएगा -3 -12 एंड 4 4 69 और इधर आ जाएगा -44 प्लस 44 एक्चुअली माइनस थी था यहाँ पे प्लस 44 एंड प्लस 8i 4 डिवाइड बाई 2 तो माइनस ट्वाइस ऑफ 1 plus 2i प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 44 minus 12 is 36 plus 8 24i whole divided by 2. Now, how do we simplify 36 plus 24i root? So what we do is we try to find the square root of this. So what we do is we assume that let a plus ib whole square is equal to 36 plus 24i. We take it as a plus ib whole square so that we can get rid of the root later on. तो इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो दिस विल बी a square minus b square plus 2aib is 36 plus 24i. So that is to say comparing the coefficient. Sorry for the interruption. So we'll have a square minus b square is equal to 36. सर 32 आएगा.
-12 + 44. क्या बोली संस्कृति? What did you say? Did I make a calculation mistake? सर 32 होगा, 44 - 12। अच्छा 44 - 12 था, राइट राइट राइट, सॉरी, राइट। हाँ, तो ये 32 होगा, यहाँ पे 32 हो गया, यहाँ पे 32 हो गया। तो वी नीड a square minus b square which would be 32 and a 2ab which would be 24. तो यहाँ से hit and trial what will be the values a and b? a आएगा 6, b आएगा 2, 36 minus 4 would be 32 and 6 into 12 into 2 would be 24. So 32 plus 24i would be like a 6 plus 2i whole square. ठीक है ना? So in that case this z will end up becoming minus twice of 1 plus 2i plus minus 6 plus 2i whole divided by 2. अब एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन, that will give us the two values of z. So minus 2 minus 4i plus 6 plus 2i by 2, or minus 2 minus 4i minus 6 minus 2i by 2. These would be the values of z. Finding the square root. सर कैन यू रिपीट वो a प्लस आई बी होल स्क्वायर वाला पार्ट कैसे आया? ये अपना assumption है, ठीक है। देख यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है, इसमें वी आर गेटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनसाइड द रूट, ठीक है। यस और सर। कॉम्प्लेक्स अब रूट को अगर हटाना है तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू इज वी कैन कंसिडर अंदर वाले पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, सो दैट रूट ऑफ अ स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड ये सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्सप्रेशन। ओके सर गॉट इट। ठीक है, हाँ, तो दिस इज एन अजम्पशन। लेट a प्लस आई बी होल स्क्वायर इज 32 प्लस 24i। इसको सॉल्व करके अगर a और b निकल गया तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ओके सर गॉट इट। इसमें डीएमटी भी लगा सकते थे, बट द प्रॉब्लम इज 32 और 24 से जब अपने मॉड निकालेंगे तो मॉड बहुत बड़ा हो जाएगा। और यू कुड डू इट एज दिस इज वेल 8 कॉमन लेके फिर डीएमटी लगा दो। डीएमटी भी इसे भी कर सकते हो, इफेक्टिवली है तो पावर ही। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, if fx is defined as x power 4 minus 4x cube plus 4x square plus 8x minus 44, find the value of f of 3 plus 2i, find the value of f of 3 plus 2i। This is an application of remainder theorem. In complex numbers, we have done this type of question in quadratic as well. So अपने को plug in क्या करना है, x equals to 3 plus 2i, but if x is equal to 3 plus 2i, this will imply that x minus 3 is equal to 2i, and if we square both the sides, that will give us x square plus 9 minus 6x is equal to minus 4, or x square minus 6x plus 13 is equal to 0। ठीक है ना? अब if we have to find f of a, so remember f of a is the remainder when a polynomial is divided by a factor.
So we can say over here that fx would be x square minus 6x plus 13 into a qx plus an rx. Okay. अब इसमें x को 3 plus 2y डाल देंगे, तो f of 3 plus 2y, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, will be the remainder of the division. तो अब डिवाइड कर दो, तो x square minus 6x plus 13 and divide it with x power 4 minus 4x cube plus 4x square plus 8x minus 44. Do the division. देखो इसका रिमाइंडर क्या आता है, वट एवर इज द रिमाइंडर ऑफ द डिविजन विल बी द आंसर. फाइंड द रिमाइंडर. बताओ, एनीवन करके बताओ रिमाइंडर ऑफ दिस. क्या है रिमाइंडर? सर -83. -83 आ रहा है. -83. हाँ हाँ, तो ठीक है, -83 वुड बी द आंसर इन दैट केस. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the argument of z is pi by 4 and mod of z plus 3 minus I, mod of z plus 3 minus I is equal to 4. Find z. What would be z? If argument of z is pi by 4 and mod of z plus 3 minus I is equal to 4, what would be z? लोकस से इंटरप्रेट करना होगा. देखो, if you look at this equation, z plus 3 minus I equal to 4. So what will this equation represent? It will represent a circle centered at -3, 1 -3, I. and radius 4. ठीक है ना? And in the Argand plane, what would argument of z equal to pi by 4 imply? Which line will have argument as pi by 4? So this would be y equal to x
argument of z equal to pi by 4 implies that z lies on the line y equal to x, and mod of z plus 3 minus I equal to 4 implies that z lies on the circle centered at -3, 1, radius 4. अच्छा, इस सर्कल का इक्वेशन कोऑर्डिनेट में व्हाट कैन वी राइट एज x plus 3 whole square y minus 1 whole square is equal to 16. So z has to lie on the line y equal to x. Z has to lie on the circle as well. How? What would be the easiest way to find z? If z lies on y equal to x and z lies on the circle as well, what would be the easiest way of solving? Solve the two equations simultaneously. Y equal to x, इन दोनों को solve simultaneously. तो y को x डाल दो. We have x square plus 9, x square plus 6x plus 9 plus x square minus 2x plus 1 is equal to 16. Solve the quadratic. 2x square plus 4x, 9 1 10 minus 6 is equal to 0. और x square plus 2x minus 3 is equal to 0. तो x का क्या वैल्यू जाएगा यहाँ से? Either x is equal to 1 or x is equal to -3. Is anyone able to follow this? But since the argument of z is pi by 4, we want z to lie in the first quadrant. तभी argument pi by 4 होगा. So considering that we want z to lie in the first quadrant, what value of x would be valid? X has to be 1, which will imply y is equal to 1. Therefore, z would be 1 plus I. Z is 1 plus I. समझ आया सबको? हाँ सर. Okay. Okay, next question. If mod of z minus 5 is less than equal to 6 and mod of omega z plus 1 plus omega square is equal to alpha, where omega is a cube root of unity, find the range of values of alpha. Find the range of values of alpha. If mod of z minus 5 is less than equal to 6 and mod of omega z plus 1 plus omega square is equal to alpha, where omega represents a cube root of unity, find the range of alpha.
आगे तो इसको सॉल्व करेंगे लाइक दिस. लेट्स से वी स्टार्ट विद दिस omega z plus 1 plus omega square is equal to alpha. अच्छा, what are the property of cube roots of unity that we have? सम 0 होगा तीनों का. Sum of the roots for cube roots of unity is always 0. So 1 plus omega square को we can replace as minus omega. ठीक है. But we know that mod is, now this is like writing mod of omega taken common z minus 1 is equal to alpha. But mod is distributive, so ये हो जाएगा mod omega into mod of z minus 1 is equal to alpha. Now for again cube root of unity, what is mod omega? 1. Mod omega 1 है, तो ये यहाँ से हट गया. So alpha is basically mod of z minus 1. ठीक है. So alpha is mod of z minus 1, which can be written as mod of z minus 5 plus 6, because we have a z minus 5 ka relation, so we want to create a z minus 5. Triangle inequality, mod of z1 plus z2 is always less than equal to mod of z1 plus mod of z2. So triangle inequality लगा दिया, तो this expression will always be less than equal to mod of z minus 5 plus mod of 6. What is the maximum possible value for mod of z minus 5? 6. सॉरी, ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया. -1 रखना था ना अंदर में, तो ये +4 होगा. -5 + 4, तो ये भी फिर +4 हो जाएगा. mod of this +4, हाँ ठीक है. So mod of z minus 5 का maximum value is 6, so this entity will always be less than equal to 10. Maximum possible value 10 है. और minimum value, how do you find the minimum value? Alpha is equal to mod of something, so what will be the minimum possible value? Zero. Mod of something can never be less than 0. So since alpha is a mod, alpha represents mod of something, alpha has to be greater than equal to 0. So the range of values of alpha would be 0 to 10. That would be the answer, 0 to 10. Okay, question number 5. Let alpha and beta be two complex numbers such that mod alpha is equal to mod beta. Okay, mod alpha is equal to mod beta. Then alpha minus beta by alpha plus beta is let's reframe the question like this. Then prove that alpha minus beta by alpha plus beta is always purely imaginary. If alpha beta are two complex numbers such that mod alpha is equal to mod beta, then prove that alpha minus beta by alpha plus beta is always purely imaginary. The question was, actual question में alpha minus beta by alpha plus beta is, और options में given है, option A purely real, purely imaginary, any complex number, none of these. But ठीक है, instead of putting the सर options, ऐसा I've क्वेश्चन given आप you. लास्ट दिन भी तो कराए थे, मतलब सेम ही था लगभग. नहीं, ये नहीं कराया था ना. वो मतलब z1 माइनस z2 वाला था, तो उसमें z1 बाय z2 को प्रूफ करना था, लेकिन वो भी मतलब अल्टीमेटली तो सेम ही तरह से हो गया था एक स्टेप से. हाँ, तो करके बताओ इसको कैसे करेंगे.
अच्छा वो बीटा से डिवाइड करके ना। हाँ हाँ। हम्म, हाँ सही है, बीटा से डिवाइड करके हो जाएगा। हाँ राइट, जी वन माइनस जी टू वाला क्वेश्चन तो पढ़ाई दिया था। ठीक है कोई नहीं। तो राइट दैट वाज द मेथड। यहाँ से भी से दैट यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज वन, फिर अल्फा बाई बीटा को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया ओमेगा, दैट विल बी लाइक सेइंग मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू वन। और यहाँ पे बीटा से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा बाई बीटा, पर यहाँ पे वो कंडीशन नहीं दिया हुआ है ना कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन। तो सर इसको मतलब लाइक वैसे प्लेन में बना के कर सकते कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा हम लोग के डिस्टेंस से। हाँ मतलब कर तो सकते हैं, इफ यू कैन प्रूव दैट वो होगा। पर इसमें कोई मॉड का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा सॉल्व करने का। वो जो अपने लास्ट के क्वेश्चन किए थे उसमें दिया था मॉड जी वन इक्वल टू मॉड जी टू एंड मॉड ऑफ जी वन माइनस जी टू बाई मॉड ऑफ जी वन प्लस जी टू इज वन। इसमें ये हाँ। कंडीशन नहीं है, इसमें ये वाला कंडीशन नहीं है कि मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू वन, इसलिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसका मेथड। So what we do in this is we'll assume that alpha is some r cis theta and beta is some r cis phi, क्योंकि दोनों का मॉड तो सेम है तो आर आर हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा will effectively be cis theta minus cis phi by cis theta plus cis phi। ठीक है, अब which is like writing cos theta minus cos phi plus I times sin theta minus sin phi डिवाइड बाई आ जाएगा cos थीटा प्लस cos phi प्लस I टाइम्स sin थीटा प्लस sin phi। तो अब पूरे एक्सप्रेशन में व्हाट द नेचर ऑफ एक्सप्रेशन दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर? cos c minus cos d, sin c minus sin d, cos c plus cos d, sin c plus sin d। तो चारों में फॉर्मूला लगा देंगे। व्हाट इज cos c minus cos d? 2 sin अल्फा थीटा प्लस phi बाई 2 into sin of theta minus phi by 2 with a negative plus sin c minus sin d would be I times 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 divided by cos c plus cos d. So 2 cos c plus d by 2 cos of c minus d by 2 plus I sin, अच्छा नहीं सॉरी, मेरा मिस्टेक, sin c minus sin d में पहले cos आएगा फिर sin आएगा ना, पहले cos आएगा फिर sin आएगा। एंड यहाँ पे पहले sin आएगा sin of theta plus phi by 2 into cos of theta minus phi by 2। तो अब 2 तो सबसे जगह से कैंसिल हो गया। एंड नाउ क्या कॉमन आएगा ऊपर में? इन द न्यूमरेटर वी कैन टेक sin of theta minus phi by 2 कॉमन। और ब्रैकेट में आ जाएगा I cos theta plus phi by 2 minus sin of theta minus phi by 2 theta plus, और डिवाइड बाई नीचे से वी कैन टेक cos of theta minus phi by 2 taken common
और इसके पास आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस 5/2 प्लस आई साइन थीटा प्लस 5/2। अब ऊपर में देखो यहाँ पे अपने पास आई कॉस माइनस साइन है, तो whenever we have a I cos minus sin, what do we do? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आई। I कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये I बाहर आ जाएगा, तो ये चेंज होके यहाँ पे 1/i आएगा, बट 1/i इज प्लस आई, तो ये प्लस आई हो जाएगा, विच इम्प्लाइज ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, so the value of this whole thing will reduce to I times tan of theta minus 5/2. Now what can we say about I times tan of theta minus 5/2? Is purely imaginary, ठीक है ना? I times tan will be a real number, so I times a real number is purely imaginary. Is everyone clear with the solution? यस सर। Clear है ना ये? Okay, next question. Question 6. If ZR are equal to 1, 2, 3 going up till 2025 are the roots of the equation summation z to the power r going from 1 to 2025 equal to 0, then find the value of mod of summation r going from 1 to 2025 1 by zr minus 1. ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई 2017 में आया था। आई हैव जस्ट चेंज द क्वेश्चन। क्वेश्चन जब 2017 में आया था तो r इक्वल टू 1 टू 2017 था, और जस्ट चेंज इट टू 1 टू 2025 सो दैट द क्वेश्चन इज मोर लुक्स मोर रीसेंट। Every year there is at least one question in math JEE में advanced में which will be based on the year in which the advance is conducted. तो तुम लोग के भी पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही जिसमें 2027 will be used as data in the question. अरे थोड़ा सा let's try to understand the meaning of the question first. So this r goes z to the power r goes from 1 to 2025 would basically imply we have z plus z square plus z cube going up till z to the power 2025 is equal to 0. So this now is like a polynomial equation हो गया. What's the degree of this polynomial? 2025. So it will obviously have 2025 roots. Now those 2025 roots are represented by this ZR. R goes from 1, 2, 3 to 2025. So these are the 2025 roots of this polynomial. Now the next thing that we are asked to find out is what would be the mod of summation r goes from 1 to 2025 1 by ZR minus 1.
अच्छा सॉरी ये 0 होगा. Just please make a small correction to the question. ये 0 से start होगा, so it's like the question is based on this. So it's a polynomial of degree 20, 25. हाँ अब ठीक है. Polynomial of degree 20, 25. It has 20, 25 roots, and then we are asked to find the value of this. ठीक है. So well, one of the ways of solving this would be we can write down the relation of the quadratic in terms of its roots, take log of both the sides and differentiate. तो उससे आंसर आ जाएगा because that will give you the exact same expression as the one that we have over here, but अपने we will not take that route. ठीक है. We'll try to do this. We'll do this with the complex number method. ठीक है. Now the complex method in this would be in this expression. ठीक है. अच्छा ये वाला expression would be like 1 by z1 minus 1 plus 1 by z2 minus 1 plus 1 going some like this 1 by z225 minus 1 is equal to 0. अच्छा पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो. दिस इज अ जीपी. कैन वी से दैट दिस इज अ जीपी? तो सम ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला लगा दो. फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 माइनस जी टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स 2026 divided by 1 minus z is equal to 0. This would imply z to the power 2026 is equal to 1. So what we are dealing with is 2025 complex roots of unity. Yes, 2026 roots of unity, and the complex roots of that is basically what ZR would represent. Z equal to 1 यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, so blah blah blah. So that's basically right. अच्छा अब इसमें जो करना है which is let's say we take okay we know, अगर तुम लोग को याद होगा I had said that now since these are like roots of unity, what happens for roots of unity? For roots of unity the roots are in GP. ठीक है ना. तो if so which means if we consider that z1 is alpha, तो z2 क्या हो जाएगा? Alpha square z3 would be alpha cube, so on so forth. z2025 would come out to be alpha to the power 225. ठीक है. अब solve करने के लिए what we need is let's say we take the first term and pair it with the last term. ठीक है. एक बार देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा. So this would be like writing alpha minus 1 plus 1 by alpha to the power 2025 minus 1. Take the LCM. So alpha minus 1 into alpha to the power 2025 minus 1, और ऊपर में आ जाएगा alpha to the power 2025 minus -1 plus alpha minus 1. देखो यहाँ तक क्लियर है सब. which is alpha to the power 2025 plus alpha minus 2. अब नीचे वाले को भी एक्सपांड कर लो. तो alpha to the power 2026 minus alpha to the power 2025 and a plus 1. But then can anyone tell me what be the value of alpha to the power 2026? अल्फा क्या? नहीं, अल्फा 1 हो जाएगा वो, मतलब रिपीट होता है हर उस पे, तो अरे नहीं रे, अरे यहाँ पे डालना सीधा अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट सैटिस्फाई द इक्वेशन. अभी तो 1 बोला. हाँ नहीं, इतना वो एक्सप्लेनेशन ये देखो ना.
कि भाई इट्स रूट ऑफ अच्छा द वैसे इक्वेशन, हाँ सेटिस्फाई द इक्वेशन, खत्म। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो दिस विल एंड अप बिकमिंग अल्फा 2025 प्लस अल्फा माइनस 2 डिवाइड बाई प्लस अल्फा माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस अल्फा टू द पावर 225। तो ऊपर नीचे कैंसिल होके वैल्यू क्या बचा, -1। So in this way what can say is every pair, ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म का सेकंड लास्ट टर्म के साथ, every pair of the rth term from the beginning and the rth term from the end will end up becoming -1। will add up to -1। अब if we start from 1 go up till 2025, how many pairs would be created? 1024 1024, ए ठीक है, सॉरी 1012 सर। जितना भी पेयर अरे बनेगा क्या वो बोल बना रहा हूँ, लेना, सॉरी सर। ठीक है ना। हाँ सर 1012 बनेगा। तो the answer of this will end up becoming, आगे से पीछे से सबको ऐड करके माइनस हो जाएगा। तो द सम ऑफ द वैल्यू, सम का जो वैल्यू आएगा, सम ऑफ दिस आर गोइंग फ्रॉम 1 टू 2025, 1 बाई ZR -1, ZR -1 वुड बी 225 टर्म से बाई 2 कर दो क्योंकि उससे पेयर का वो आएगा माइनस के साथ। अब मॉड करने पे, पर अपने को मॉड का वैल्यू चाहिए तो ये मॉड हो जाएगा विच विल गिव अस द आंसर एज 2025 बाई 2। दैट विल बी द आंसर, 2025 बाई 2। टोटल में 2025 टर्म्स है, हाफ का पेयर्स हो जाएगा, तो विल गेट द वैल्यू एज 2025 बाई 2। तो सर मिडिल टर्म किसका पेयर अप होगा? मिडिल टर्म का वैल्यू हाफ निकल जाएगा, ठीक है सर। ठीक है ना। जो मिडिल टर्म है वो जो जो रियल रूट है उसके साथ पेयर होगा, तो वैसे करके वैसे सेट हो जाएगा वो, ठीक है। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ये आंसर का 2025 बाई 2 आ जाएगा। फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट करके दिस इज हाउ व्हाट यू विल गेट द आंसर एज। ओके, पर इसका लॉजिक तो समझ में आ गया ना, ये वाला पार्ट। दिस इज द की सिंप्लीफिकेशन पार्ट, ये वाला जो स्टेप किया अपने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चीज समझ में आ गया ना। हाँ सर। सॉल्विंग यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स, एन रूट्स, बहुत मस्त क्वेश्चन है, एडवांस में काफी बार आया है ऐसा सिमिलर क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद चलो एक इजी क्वेश्चन करते हैं जस्ट सो दैट यू कैन डाइजेस्ट द प्रीवियस क्वेश्चंस इजीली। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, if
the area of the triangle formed by Z, IZ and Z plus IZ is 8 square units. Find mod Z. What is the nature of the triangle? Triangle formed by Z, IZ and Z plus IZ. So the trick in the question is, if we have a complex number Z, suppose this is a complex number Z. So what would be the complex number IZ? मान लो ये वेक्टर था, this vector is Z. So how do we create a vector IZ, or what would be happen to IZ? परपेंडिकुलर हो जाएगा. Can we write IZ as Z e power I pi by 2? है ना, e power I pi by 2 क्या होता है? Cos pi by 2 plus I sin pi by 2, which is I. But if we multiply a complex number Z with e power I pi by 2, what would e power I pi by 2 do? E power I pi by 2 do? It will rotate the complex number by an angle 90 degrees. So if this is Z, then a vector perpendicular to it, this would be IZ. And then Z plus IZ will be their resultant, third side of the vector. So what we have basically is a right angle triangle, जिसका एक side is Z, एक side is IZ, and the third side is Z plus IZ, resultant. Does everyone follow this? Multiplying a complex number by I rotates the complex number by 90 degrees. Multiplying by I rotates Z by 90 degrees. Okay. For a right angle triangle, how do you find the area? Half base into height. So this would be half. अच्छा, इस केस में बेस क्या होगा? मॉड z into height क्या होगा? Mod of iz. But what can we say about the mod of iz? Same as mod Z. Mod of iz will be the same as mod z. So according to the problem, half of mod z square is equal to 8. Therefore, how much is mod z? 4. Mod z is 4. Please remember, mod z सिर्फ 4 होगा, -4 नहीं होगा. Mod cannot be negative. So don't take it as plus minus pi by 4. Yeah, this was a simple question. Okay, next question. Find
the number of find the number of complex numbers satisfying the equation z square is equal to z bar into 2 to the power 1 minus mod z. Find the number of complex numbers satisfying the equation z square is equal to z bar into 2 to the power 1 minus mod z. तो लॉग लेके कुछ करना होगा क्या? नहीं, लॉग वॉग नहीं चाहिए यार. अच्छा ठीक. गुड नाइट. Number of find the number of complex numbers satisfying the equation z square is equal to z bar. तो इसको सॉल्व करने का मेथड वुड बी टेक मॉड ऑफ बोथ द साइड. लॉग नहीं लेना है, मॉड लेना है, मॉड ऑफ बोथ द साइड. So we'll get mod z square is equal to mod of z bar, and do note that 2 to the power 1 minus mod z will be a real number. Mod z is real, 2 power 1 minus z is real, so mod नहीं आएगा इस पे. ठीक है, but mod z bar is the same as mod z, so this will be like mod z taken common और ब्रैकेट में हो गया mod z minus 2 to the power 1 minus mod z is equal to 0. So either mod z is equal to 0 or mod of z is 2 to the power 1 minus mod z. तो mod z इक्वल टू 0 तो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है, z इक्वल टू 0, तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया. अब how many solutions will we get from this equation? तो पहले ये सोचो, for what value of mod z can mod z be equal to 2 to the power 1 minus mod z? If mod z is equal to 2 to the power 1 minus mod z, तो mod z क्या होना चाहिए? 1. Well, the only option is 1. हिट एंड ट्रायल से करके देखेंगे. Obviously हिट एंड ट्रायल से करेंगे, सॉल्व तो होगा नहीं है. So we'll only have one solution for the equation, and that will be mod z is equal to 1. But if mod z is equal to 1, तो z bar क्या हो जाएगा? 1 by z. Back substitute in the original equation. तो ये बन जाएगा z cube is equal to 2 to the power 1 minus mod z. ठीक है. Now again, considering that ये वाला तो is a real number, ये देख constant है. Like constant क्या मतलब, it's a real number. So how many roots will we get for this equation? अच्छा mod z तो 1 है ना, सॉरी mod z 1 था तो mod z तो 1 प्लग इन कर देंगे. माय बैड. तो mod z 1 प्लग इन करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा. तो z cube is equal to 1 हो जाएगा. Now what be the roots of z cube equal to 1? 1 omega and omega square. 1 omega and omega square. So there will be 4 complex numbers that satisfy the equation. They will be 0, 1, omega and omega square. That will be the answer. 4 complex numbers will satisfy this equation: 0, 1, omega and omega square. Clear it?
Okay, next question. I think 9th question होगा ये. If mod of Z1 is equal to mod of Z2 is equal to mod of Z3 is equal to dot 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 mod of Zn and all of it is equal to 1. Okay, let Z1, Z2, Z3, Zn सबका mod is 1. Now we have a complex number Z which is defined as summation of ZR are going from 1 to n multiplied with summation of 1 by ZR, again R goes from 1 to n. Okay, then prove that mod Z will be less than equal to n square. Prove that mod Z will be less than equal to n square. Okay, so for this, okay, Z would be the first part is like Z1 plus Z2 plus Z3 going up till Zn and into में आ जाएगा 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 and this also going up till 1 by Zn. But since Z1, Z2, Z3, Zn सबके लिए सबका mod तो 1 है, so can we say that this implies that Zk bar is 1 by Zk सबके लिए होगा, सारा Z's के लिए होगा. तो ये जो सेकेंड वाला टर्म है this becomes mod of Z1 plus Z2 plus Z3 dot dot Zn into Z1 bar plus Z2 bar going up till Zn का bar. ठीक है, but bar is distributive. Yeah, in fact, so ऐसे कर लो. So अब if we assume let omega is Z1 plus Z2 plus Z3 plus Zn. So if we take this as omega, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ये ओमेगा बार हो गया. So Z is like writing omega into omega bar. So mod Z will be mod of omega into omega bar. पर mod of omega into omega bar क्या आ जाएगा, mod of omega square. ठीक है, अच्छा अब let omega be this, इस पे वापस आ जाओ. तो इसमें if we take mod of both the sides, so mod of omega would be mod of Z1 plus Z2 plus Z3 going up till Zn. And triangle inequality say this will always be less than equal to mod of Z1 plus mod of Z2 plus mod of Z3 going up till mod of Zn. पर राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है, n. ये तो n आ जाएगा बिकॉज इंडिविजुअली तो सबका वैल्यू 1 है. सो दिस mod ओमेगा विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू n. यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये तो mod ओमेगा स्क्वायर है, so mod z must be less than equal to n square. Mod z is equal to mod omega square, but this will always be less than equal to n square. Therefore, mod z is less than equal to n square.
क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पर समेशन वमेशन देके एक ऐसा एक्सप्रेशन बना देगा ताकि लुक लाइक यार क्या ही तो क्वेश्चन दे दिया। Okay, next question number 10. So let's say mod alpha is equal to 1 and the equation alpha z square plus z plus 1 is equal to 0 has purely imaginary root. It has purely imaginary root. Then find the value of tan of the argument of alpha. Find the value of tan of argument of alpha. If mod alpha is equal to 1 and the equation alpha z square plus z plus 1 has purely imaginary roots, then find the value of tan of argument of alpha. So mod alpha is 1, so we can assume that alpha ko we can take as some cis theta, and theta in that case will represent the argument of alpha. Okay, and tan alpha का tan theta का value निकालना है. In that case, the question becomes finding the value of tan theta. So this question in that case will end up becoming cis theta z square plus z plus 1 equal to 0. ये quadratic हो गया, and it has purely imaginary roots. Purely imaginary roots है. So we can say that any root of this will be in the form of iy. Purely imaginary roots है, तो iy will be the root. So since iy is the root, it must satisfy the equation. So cis theta iy square plus iy plus 1 is equal to 0. तो iy का स्क्वायर हो जाएगा minus y square.
तो माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा माइनस आई वाई स्क्वायर साइन थीटा प्लस आई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बट अगर ये 0 है तो रियल पार्ट शुड बी 0, इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0। तो इसका रियल पार्ट इज लाइक 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी वाले पार्ट से आ जाएगा वाई स्क्वायर साइन थीटा प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाई साइन थीटा। अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे तो वाई होगा ना। हाँ ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस होगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये। तो दिस विल गिव अस वाई टेकन कॉमन 1 माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, पर वाई तो 0 हो नहीं सकता बिकॉज दैट विल बिकम अ रियल रूट एंड द रूट्स आर इमेजिनरी, तो वाई कैन नॉट बी 0। तो यहाँ से आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा बट वाई स्क्वायर इज 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर करके वी गेट 1 बाई कॉस थीटा इज 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 विच इज अ क्वाड्रेटिक इन कॉस। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा चार्ज लगाना पड़ेगा बिकॉज मिड टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होगा इसका। तो सीधा चार्ज लगा के इट विल बी लाइक -1 प्लस रूट फाइव -1/2, ये कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। नेगेटिव वाला ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज कॉस थीटा है, तो -1 -√5/2 कॉस थीटा की रेंज के बाहर आ जाएगा। तो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा आ गया, टैन थीटा चाहिए, बस खाली ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। ठीक है ना, वी नो कॉस थीटा एंड जो वैल्यू निकालना है वो है टैन थीटा। टैन ऑफ द आर्गुमेंट इज बेसिकली टैन थीटा। तो कॉस थीटा से और टैन थीटा का फाइनल आंसर आएगा होल रूट ऑफ √5 + 1/2। ये आंसर आएगा टैन के लिए। cos theta is √5 by this 1/2, so tan theta would be whole root √5 + 1/2। ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। Okay, next question।
11. If mod of Z1 is equal to 3, mod of Z2 is equal to 4, mod of Z3 is equal to 5, and mod of 3Z1 plus 4Z2 plus 5Z3 is equal to 12. Find the value of mod of 27 Z2 Z3 plus 64 Z1 Z3 plus 125 Z1 Z2. Find the value of mod of 27 times Z2 Z3 plus 64 times Z1 Z3 plus 125 times Z1 Z2. Okay, method of solving this. From the expression required, we take Z1, Z2, Z3 out common. तो mod में क्या आएगा 27 by Z1 plus 64 by Z2 plus 125 by Z3. ठीक है. अब we go back to the first original given है. If mod Z1 is equal to 3, तो squaring both the sides आ जाएगा. Mod Z1 square is equal to 9, which would be like saying Z1 into Z1 bar is 9, or Z1 bar is equal to 9 by Z1. So following the same example, second वाले से आ जाएगा mod of Z2 bar would be 16 by Z1 and Z3 bar would be 25 by Z1. So we take those values and इसमें use करेंगे. So the expression becomes mod of Z1, क्योंकि mod distributive है, so mod of Z1 into mod of Z2 into mod of Z3 into mod of, अच्छा 27 by Z1 में से 9 by Z1 हो जाएगा Z1 बार, तो बचेगा 3 Z1 बार प्लस 4 Z2 बार प्लस 5 Z3 बार. ठीक है ना. But then mod of this will be the same as mod of the bar. तो ये हो जाएगा 3 into 4 into 5 into 12. That will be the answer. Clear है. Is everyone okay with this? हाँ सर.
Okay, next question. 12. Find the area bounded by argument of z is equal to pi by 3, argument of z is equal to 2 pi by 3, and the argument of z minus 2 minus 2 root 3 is equal to pi in the Argand plane. Find the area bounded by argument of z equal to pi by 3, argument of z equal to 2 pi by 3, and the argument of z minus 2 root 3 is equal to pi. अरे लोकस का क्वेश्चन है ये. If argument of z is pi by 3, what's the locus of z? It is a ray of light. It is a ray of light originating from origin inclined at an angle pi by 3. So pi by 3 is equal to nothing. तो ये होगा फर्स्ट वाला. Now argument of z is equal to 2 pi by 3 would be a ray of light moving at an angle of 2 pi by 3. तो ये वाला लाइन आ जाएगा. And argument of z equal to 2 minus 2 root 3. So 2 minus 2 root 3. What's the argument of 2 minus 2 root 3? Where will 2 minus 2 root 3 be located? So 2 minus 2 root 3 would be a point on this line. 2 comma 2 root 3 at a distance of 2, and argument of z minus this is equal to pi will imply कि ये line जा रहा है ऐसे. So the three straight lines will create a triangle OAB. You have to find the area of this triangle. Area bounded by the three lines. The three lines will create a triangle. We have to find the area of this triangle. So because of symmetry, at the angle, how much is this angle? Triangle के अंदर वाला angle 60 degrees है. ठीक है. And ये वाला लेंथ कितना होगा? OA. How much is OA?
We can just consider this as an equilateral triangle क्योंकि अंदर का एंगल 60 है and OA will be equal to OB. तो ये 4 हो जाएगा. तो OA कितना आएगा 4. So it's an equilateral triangle whose side is 4. OAB will be an equilateral triangle क्योंकि the interior angle is 60 and ये OA will be equal to OB with the interior angle 60 implies it has to be an equilateral triangle. So area of equidistant triangle का formula √3 by 4 into 8 squared. So the answer would be 4 √3. Area bounded is 4 √3. तो वो डिस्क्रिमिनेंट से भी तो निकाल सकते हैं, मतलब हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y1 करके, मतलब y2 माइनस y3. पर उतना करना क्यों है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ ही गया ना. हाँ मतलब कर सकते हैं, तीनों का कोऑर्डिनेट्स निकाल के कर सकते हैं. ओबी का इक्वेशन लिख लिया क्योंकि एंगल तो पता ही है अपने को. ओबी का इक्वेशन लिख लिया, बी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, डेफिनेटली कर सकते हैं. बट इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख ही रहते तो मैंने क्यों करना है वाला बात है. ओके सर. बट दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड रॉन्ग. जो तू करने का सोच रहे हैं डेफिनेटली नॉट बी कंसिडर्ड रॉन्ग. अच्छा एक इंटरेस्टिंग डाउट भेजा था एक जन. हाँ वो भी कर ही लेते हैं क्योंकि काफी अच्छा डाउट था ये. मतलब इट वाज अ रिजल्ट दैट यू एक्चुअली हैव टू रिमेंबर. सो द क्वेश्चन इज इफ cos ऑफ 1 minus I is equal to a plus IB, find A and B. If cos of 1 minus a plus IB, if cos of 1 minus I is a plus IB, then we find the value of A and B. Yeah. So it's actually we have a couple of very interesting results that you actually need to remember. देखो, this question is based on the fact that cis theta is equal to e power I theta होता है. ये रिप्लेस करते हैं ना अपने r cis theta is r e power I theta. Okay. And cis of minus theta e power minus I theta हो जाएगा in that case. So if we add the two, we get 2 cos theta is e power I theta plus e power minus of I theta. And similarly, 2 sin theta is always e power I theta minus of e power minus I theta. भाई ये couple of results है that you have to remember. ठीक है ना. So cos of 1 minus I, using this result, what can we say would be cos of 1 minus I? So cos of 1 minus I would be e to the power I of 1 minus I plus e to the power I of 1 minus of 1 minus I by 2 is a plus IB. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो. So what will that give us? E to the power I plus 1 plus e to the power ये कितना आएगा माइनस आई माइनस 1 प्लस माइनस आई. माइनस आई आएगा क्या, माइनस आई आएगा आई गेस. ठीक है ना, बाई 2. अच्छा अब इसको वी कैन राइट एज e into e power I and इसको we can write as 1 by e into e power I या e power minus I कर दो. Let's say इसको ऐसे लिख देते हैं. इसको लिख दिया ऐसे e to the power minus I by e whole divided by 2. देखो यहाँ तक क्लियर है सबको.
अच्छा, अब e power I, what can we replace e power I as? E into cis of 1 plus e power minus I हो जाएगा cis of -1 by e whole divided by 2. अब इस एक्सप्रेशन का व्हाट इज द रियल पार्ट? तो रियल पार्ट आएगा e plus 1 by e whole divided by 2 cos 1 and plus I टाइम इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा e minus 1 by e whole divided by 2 into sin 1. Was everyone able to follow this? e power I हो जाएगा cis 1, e power I is basically cis 1. ये समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो. Now comparing the real part and the imaginary part, a का वैल्यू हाँ क्या हो सर गया? Half of e plus 1 by e cos 1 and comparing the imaginary part, b का वैल्यू हो जाएगा half of e minus 1 by e sin 1. तो अगर कभी ऐसे कोई tricky question दे दे, so remember that this is how cos theta and sin theta are found. This is known as, अच्छा, ये जो दो relations है, these are known as Euler's identity. ठीक है, Euler's identity. 2 cos theta would be e power I theta plus e power minus I theta. 2 sin theta would be e power I theta minus e power of minus I theta. Euler identity. Okay, so we will wind up at this for today. I hope everyone is able to understand the question. So that will be it for complex numbers as well. ठीक है ना?